वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी जो शब्द है इसका अर्थ होता है कामनेस, कंपोजर। अगर डिफ़िकल्ट परिस्थिति भी आ गई है उसके अंदर भी आप कंपोजर मेंटेन कर रहे हैं, आप ट्रैंक्विल है, सीरीन है, उसके लिए इक्वानिमिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस नाउन का अर्थ है कामनेस, कंपोजर, प्लेसिडिटी, इवननेस ऑफ माइंड, especially under stress, when you're balanced, when you have the exact right disposition, उसके लिए इक्वानिमिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, एकदम शांत स्वभाव वाले। एजिटेशन और डिस्कम्पोजर इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड। Even as Amazon and local rival Flipkart push into groceries, big baskets founders profess equanimity. That means they're still calm despite the competition that's coming on. Moving on to the next word, connoisseur. Connoisseur शब्द का अर्थ होता है एक्सपर्ट, एक मैवरिक, एक गुरु है उस पर्टिकुलर फील्ड के, माइस्ट्रो है, उनके लिए we're going to be using the word connoisseur. इसे connoisseur की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। एक गुरु, एक माइस्ट्रो, शार्क, वर्चुओसो, विजर्ड, विज, or we also call it a cognizant. Cognizant is a very important synonym of the word connoisseur. इसका meaning है एक expert, one who understands the details, technique or principles of an art and is competent to act as a critical judge. One who enjoys appreciation of subtleties, particularly music, art से related. उसके लिए हम connoisseur शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका opposite हो जाता है someone who's not having expertise, someone who's an amateur. Let's look at the usage of the word connoisseur. A connoisseur of music, so someone who's an expert especially in the subtle arts. यहाँ पर as you can see, when did you become a connoisseur of music? Wise guy, a competent critical judge of something as art, wine, music, etc. उसके लिए हम connoisseur शब्द का प्रयोग करेंगे और connoisseur की तरह we're going to be pronouncing this particular word. Moving on to the next word, munificent. Munificent शब्द का अर्थ होता है very generous. जब आप lavish हो जाते हैं, बहुत दयालु होते हैं, उसके लिए we using the word munificent. Munificent, generous, bountiful, magnanimous, liberal, bounteous. Very liberal in giving or bestowing. Someone who's lavish, someone who's characterized by great liberality as well as generosity. उनके लिए हम munificent शब्द का प्रयोग करते हैं. Let's look at the usage. He is a munificent host who has presided over many charitable events at his mansion. Here munificence, the noun, lavish, generosity. He is in a state of shock. Did you overtip him again, dear? As the wife is saying. So here munificent, absolutely generous. In a jiffy का अर्थ होता है instantaneously, immediately, very soon, in a flash, any minute, in an instant. बहुत ही छोटे अंतराल के अंतर्गत जब आप काम कर देते हैं उसको in a jiffy बोलते हैं. In a moment. Let's look at the usage. Recommended software upgrades can be brought down in a jiffy. That means they can be brought down instantaneously. So in a jiffy means something. I'll be back in a jiffy as the man is saying. That means he'll be there suddenly. He'll come एकदम से. इसके लिए हम in a jiffy का प्रयोग करते हैं. Up to the hilt. Up to the hilt शब्द का अर्थ होता है whenever we are talking about up to the hilt, the greatest maximum capacity, as much as possible or to the highest level possible, as much as or to the greatest degree possible, completely or utterly, उसके लिए up to the hilt का प्रयोग किया जाता है. जितना हो सके आपसे आप उतना करेंगे, उसके लिए up to the hilt का प्रयोग करते हैं. Let's look at the usage of the word up to the hilt. Smith's colleagues were prepared to defend him to the hilt. That means to the maximum capacity possible. The estate was mortgaged up to the hilt. That means वो debt ridden थे to the maximum limit possible. They've had to borrow to the hilt to get the company off the ground. We're ready to defend our client to the hilt in the court. So here moving on to the quiz of the day. Loud. Loud शब्द का अर्थ होता है जब आप praise कर रहे हैं, that too lavishly. So whenever you're trying to praise someone, meticulous is something that is fastidious. Perfect है, very careful है. So something that is very careful, something that is fastidious, उसके लिए meticulous शब्द का
का प्रयोग किया जाता है। न्यूगेटरी शब्द का अर्थ होता है समथिंग दैट इज वर्थलेस, समथिंग दैट इज ट्रिफल, उसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द वर्ड समथिंग दैट इज वर्थलेस, ट्रिफलिंग, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द वर्ड न्यूगेटरी। से न्यूगेटरी की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। प्लमेट शब्द जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, इसका अर्थ है एकदम से गिर जाना। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लमेट मीन्स समथिंग दैट फॉल्स इमीडिएटली, टू फॉल और टू प्लंज। रिफ्यूट का अर्थ होता है टू कॉन्ट्रडिक्ट और टू डिसअप्रूव समथिंग। सिमिली व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, उसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द वर्ड सिमिली व्हेन यू आर कंपेयरिंग वन थिंग विद अनदर बाय यूजिंग द वर्ड like as well as. Theocracy is a government by the priest that represents God, so it's a government by priests. Vacuous शब्द का अर्थ होता है empty headed, lacking intelligence, something that is empty, void, something that is empty headed or lacking intelligence. Whimsy शब्द का अर्थ है playful idea, something which is a playful or a fanciful idea, उसके लिए we're going to be using the word whimsy. आप cheat sheet में से दोबारा से आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं. In case of any doubts you can mention those in the comment section.